Jai Hind, dear students of class 11th Geography Optional. Welcome in Geography Practical class. Today I will discuss chapter 5 Topographical Maps. Lesson 2 all up to lesson 2 already discussed. 3 and 4 is now deleted by CBSE. So we are going to discuss chapter 5 Topographical Maps. You know that the map is an important geographical tool. A geographer is incomplete without the maps. You also know that maps are classified on the basis of scale and functions. As we have discussed in lesson 1, the topographical maps which have been referred to in chapter 1 are utmost important to geographers. They serve the purpose for base maps and are used to draw all the other maps. So topographical map, also known as general purpose maps, are drawn at relatively large scale. These maps show important natural and cultural features such as relief, vegetation, water bodies, cultivated land, settlement, transportation network, etc. Here, these are drawn on large scale. Larger the scale, smaller the area, smaller the scale, the larger the area. These maps are prepared and published by National Mapping Organization of each country. For example, the Survey of India. The Survey of India prepares the topographical maps in India for entire country. In this lesson, basically we are going to discuss about the contours, and on the basis of contours, how we can draw the different type of slopes like U-shaped valley, U-shaped valley, V-shaped valley, mountain, plateau, etc. So, students, you have your practical file and you are requested to note down glossary of this lesson. After that, we are going to discuss directly about the topographical map methods to relief presentation. Through topographical maps, there are methods of relief representation. The Earth's surface is not uniform and it varies from mountains to hills to plateaus and plains. The elevation and depressions of the Earth's surface are known as physical features or the relief features of the Earth. यानी physical features और relief features synonymous है. दोनों को बोलने का मतलब सेम है. फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है रिलीफ फीचर्स. रिलीफ यानी वहां की टोपोग्राफी, उच्चावच जिसको हिंदी में बोलते हैं. The maps showing these features are called relief maps. There are also, you can see here in practical work it is given that conventional signs and symbols. कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, परंपरागत रूप से जो मैप में हम किसी सिंबल का यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर वे में, वो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी द्वारा एक्सेप्टेड है. So we are discussing about this later. After this, a number of methods have been used to show the relief features. As we are talking about representation of relief, number of methods are there. This method include hazures, hill shading, layer tints, benchmarks, spot heights, contours, etc. However, contours and spot heights are predominantly used, and in India we are using more the contour lines to represent the relief of any small area on a large scale. So, in map, suppose if there is a road. Now here you can see roads. Road are of various types: metal, according to importance, distance stone. It is a road according to importance, and distance stone 20 kilometer. So here it is road. Roads which are unmetalled according to importance. Here you can see the roads which are unmetalled. If bridge, cart track, pack track or pass is there with bridge, you can see they are used like this. So in conventional signs and symbols we are using the same thing. It is used by the entire geographical community of the world. Streams means the rivers. You can see this is the way to represent. Dams. Dams are also various types like masonry dams, embankments, etc. So accordingly we are preparing that.
then swamp, roads, etc. Further, you can see that embankments or road or rail. Here you can see embankment both side, and here in between roads is here. Railway, broad gauge. Railway is of three types basically in India: broad gauge, meter gauge, and narrow gauge. Broad gauge Broad gauge is the railway track in which the distance between two lines is 1.68 meter about. But in meter gauge, only 1 meter distance is between two lines parallelly, and in narrow gauge, 0.73. So here you can see railways are located like this. If it is a railway station, we have to mark here this like this and called as RS railway stations. Railway other gauges like the double track, single with distance mile or stone under construction, railway lines of tramway, telegraph in cutting with the tunnel, etc. Contour cliffs, etc. are shown like this. So sand features a lot of things. More about, we are going to discuss about temples, chhatri, church, mosque, idgah, tomb, graves. You can see the same symbol is utilized in the world to represent. Suppose where the pointer is this time, it is a temple. This is chhatri. This is a church. This is a mosque. This is idgah. It is a tomb. So the entire international signs and symbols you have to draw on a white space sheet in your practical record file, and then we'll discuss different types of contours. Actually, what is contour? Contours are the imaginary lines joining places having the same elevation above the mean sea level. A map showing the landforms of an area by contours is called contour map. जनरली टोपोग्राफिकल मैप जो होता है वो छोटे से एरिया पे को लेने के लिए और उसको डिटेल में दिखाने के लिए लार्ज स्केल यूज करते हैं हम लोग। बड़ी सी सीट पे उससे एक एक सेटलमेंट का, रोड का, रेलवे का, जंक्शन का, हर चीज का लोकेशन आराम से बना सकते हैं। The contour lines on a map provide useful insight into the topography of an area, or according to contour, as contours are the imaginary lines joining places having the same elevation or height. So we get the idea of whether the region is plain or a mountain. Contours are drawn at different vertical intervals like 20, 50, 100 meters above the mean sea level. It is known as contour interval. दो कंटूर के बीच का जो इंटरवल है 20 हो सकता है, 50 हो सकता है या 100 मीटर हो सकता है. It is known as contour interval. It is usually constant on a given map. It is generally expressed in meters. While the vertical interval between the two successive contour lines remains constant, the horizontal distance varies from place to place depending upon the nature of the slope. As given to your book, the horizontal distance, also known as horizontal equivalent HE, is large when slope is gentler and decreases with increasing slope gradient. Some of the basic features of contour lines. A contour line is drawn to show places of equal heights. Contour lines and their shapes represent the height and slope of the gradient of the landform. Closely spaced contours represent steep slope and widely spaced contours represent gentle slope. You can see further here. Here you can see gentle slope and steep slope. In steep slope, you can see the contour lines are very close to each other, but in gentle slope, they are far away from each other. Right? So, in this lesson, basically, we are going to discuss and prepare these type of slopes through your computer's freehand. Contours freehand. When two or more contour lines merge with each other, they represent features of vertical slopes such as cliff or waterfalls. Two contours of different elevation usually do not cross each other. अगर दो कंटूर लाइन है और दोनों का एलिवेशन यानी हाइट अलग है तो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती हैं. ड्राइंग ऑफ कंटूर्स एंड देयर क्रॉस सेक्शंस. We all know that all the topographical features show varying degree of slopes. For example, a flat plane exhibits gentle slopes and cliff and gorges are associated with the steep slopes.
Similarly, valleys and mountain ranges are also characterized by varying degree of slopes, steep to gentle. Hence, the spacing of contours is significant since it indicates the slope. तो कंटूर खींचने में ही महारत होना चाहिए. अगर कंटूर लाइन प्रॉपरली ड्रॉ कर लोगे तो उसके बाद उसका इंटरसेक्शन क्रॉस सेक्शन बनाने के बाद जब हम फीचर को ड्रॉ करते हैं तो आसान हो जाता है. Now here you can see the types of slope. The slopes can be classified as gentle, steep, concave, convex, irregular, undulating. The contours of different types of slopes show a distinct specific pattern. Here you can see gentle slope. You have to write about this gentle slope and how the gentle slope is represented through a contour line. Here you can see इस तरह से हम लोग भी एक व्हाइट शीट पे घेरा बना लेंगे और उसमें फ्री हैंड कंटूर्स, ये जो ए बी सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन लाइन है, इसको पहले नहीं खींचना है. पहले कंटूर्स को धीरे धीरे खींच लीजिए स्पेसिंग करते हुए. जैसे जैसे इसमें स्पेस बढ़ा है, अंदर ज्यादा है, मतलब यहाँ हाइट ज्यादा है, 600 मीटर है. जैसे जैसे दूर जा रहा है बाहर, यहाँ पे 100 मीटर है. अब क्या करते हैं, कंटूर ड्रॉ करने के बाद हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं. ठीक बीचों बीच इसको एक जगह से हम लोग ऐसे काट देते हैं. लाइन का नाम बोलते हैं ए बी. कट गया. अब उसके बाद आइए नीचे. यहां देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100, 2 बराबर 200, 3 सेंटीमीटर 300. Likewise 6 centimeters means 600 meters. At both the end we have to mark 1, 2, 3, 4, 5, 6 centimeters. We have to write one side. एक साइड लिखेंगे, लेकिन जहां 1 सेंटीमीटर आता है वहां पे कितना लिख रहे हैं, 100 मीटर्स. तो आप इसके जस्ट अपोजिट इस साइड में यहाँ 1 सेंटीमीटर पे मार्क लगाएंगे और लाइन खींच लेंगे. जैसे यहाँ लाइन सब खींचा हुआ दिख रहा है आपको, इस तरह आप सबकी लाइन खींच लोगे. सबकी लाइन जब आप खींच लेंगे उसके बाद करना क्या है, जैसे 600 है क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ देखो 600 से हम लोग इस तरह से धीरे धीरे रे गिराते हैं और ये जो आके 600 पे छोड़ देते हैं. देखो पहले वाले का 600 है, 600 पे रुक गया. दूसरा वाला 500 है, ये देखो रे गिरा रहे हैं, कहां तक आ रहा है, अप टू दिस पॉइंट, इट इज 500. लाइकवाइज 400 यहां पे आ रहा है, 300 यहां पे आ रहा है, 300 तक, 200 पे आ गया एंड 100 यहां पे आ गया. अब इसके बाद फ्री हैंड हम लोग यहां से लेके सभी पॉइंटिंग को ऐसे करके जोड़ देंगे. तो यहाँ का जो रीजन है इसको सेट कर देंगे, तो क्या दिखेगा, जेंटल स्लोप. उसी तरह से आपको ये स्टीप स्लोप भी दिखाना है. स्टीप स्लोप माने जहां बहुत ज्यादा तेज ढलान हो उसको हम स्टीप स्लोप बोलते हैं. ठीक है. इसके बाद देखिए कॉन्वेक्स स्लोप, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव स्लोप, सबको आपको लिखना है. इसके बारे में भी जो यूनिट में इंफॉर्मेशन है, जैसे a slope with a gentle gradient in the lower part of a relief feature and steep it is an upper part called as concave slope. Here you can see concave and this is convex. ये सब लिखना है दोनों के बारे में. फिर द प्रोसेस सेम, इस तरह से हम लोग ब्लॉक बना लेंगे और ब्लॉक बनाने के बाद फिर कंटूर्स खींचेंगे और फिर उसके बाद सेक्शन ए बी मार्क करेंगे. यहाँ पे उसी के हिसाब से 1 सेंटीमीटर का 100, 2 का 200 ऐसे करके मार्क करते जाएंगे. तो सेम केस विथ दिस, और इस तरह से हम इस पूरे कॉन्टूर्स को बनाएंगे. कॉनिकल हिल लाइक द माउंटेन का देखो कंटूरिंग कैसा हुआ. अंदर बीच में 2200, फिर 2200 के बाद 2000, 1900, 2200, 2100. देखिए यहाँ पे है 2200, 2100, 2000, 1900, 1800, 1700, likewise and the last 1500. इसके लिए भी क्या करेंगे, कंटूर्स ड्रॉ कर लेंगे चारों ओर से. जैसे ये बॉर्डर हम पहले से ही बना कर रखेंगे. देखिए बॉर्डर पहले से ही बन के है. फिर कंटूर्स ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन ए बी खींच देंगे और इधर जिस तरह से
यहाँ 1500 दिया गया है, तो इधर भी 1500, मतलब लिखना एक साइड है लेकिन 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इधर भी मार्क कर लेंगे ताकि सीधा सीधा लाइन आपका बन जाए। और फिर उसके बाद रेस देखो 2200 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये यहाँ तक आया, और इस एंड से भी 2200 का ये देखिए यहाँ पे, ये, और देखिए यहाँ तक आया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे 1500 देखो सबसे छोटा है, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हुआ है, यहाँ से लेके 1500 तक आ गए। इस साइड भी देखो 1500 को लेके अप टू 1500 तक आ गए। और उसके बाद क्या करेंगे, जो पॉइंट्स मिल जाएगा उसको हम लोग फ्री हैंड ऐसे 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 मिलाते हुए कोनिकल शेप दिखाते हुए जोड़ देंगे। तो इसको हम जोड़ देंगे और बीच में सेट कर देंगे। तो कैसा लग रहा है, अब क्लियर हो जा रहा है, कोनिकल शेप है, इसको माउंटेन्स भी बोलते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए कंटूर्स बनाया गया है टू शो अ प्ले टू। सो इन दिस वे you have to prepare all these contours and you have to write about them like the V-shaped valley, U-shaped valley, etc. And contours are of different types. You must practice, then finally do in your practical file. I see it at the time of practical examination also as well as regular classes also. So in this way all these relief features you need to draw. Clear? Here it is given summary, step of drawing of cross section. The following steps may be followed. First, draw a straight line cutting across the contours on the map and mark as AB. Take a strip of white paper on graph, place it edge along the AB line. Mark the position and value of every contour that cuts the line AB. Choose the suitable vertical scale like half centimeter equal to 100 meter. You can take 1 centimeter equal to 100 meter. It's on your choice. To draw horizontal lines parallel to each other equal to the length of the AB. The number of such lines should be equal or more than that the total contour lines. मान लो 2000 तक दिखाना है तो उतना तक का लाइन खींचे हुए, उससे एक या दो ज्यादा लाइन भी खींच लेंगे 2100-2200 का तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद मार्क द अप्रोप्रिएट वैल्यूज करस्पॉन्डिंग द कंटूर वैल्यूज along the vertical and cross section. Now place the edge of marked paper along the horizontal lines at bottom line of cross section in such a way that AB paper corresponds to the AB on the map and mark the contour points. In this way we can complete this work. Here, given a topographic sheet is usually interpreted under the following heads: marginal information, relief and drainage, land use, means of transportation and communication, human settlement, etc. In this lesson, basically you have to complete the contours showing different type of slopes, mountains, plateaus, etc. All these with the help of contours you have to draw on white sheet, and on ruled sheet you have to write about the information given in box like the gorge. Gorge is also known as I-shaped valley. Here you can see the valley is like I-shaped. दोनों तरफ खड़े वॉल, स्ट्रेट वर्टिकल वॉल यू कैन सी, दीवार खड़ी है दोनों ओर यानी पहाड़ है, और नदी बिल्कुल इसको काटते हुए अंदर तक नीचे आ गई है, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं गॉर्ज. ओके, देन वी आर हैविंग स्पर. A tongue of land projecting from higher ground onto a lower is called a spur. It is also represented by V-shaped contours. देखिए ये स्पर है. इस तरह से आप जितना भी इसमें दिया हुआ है कंटूर्स सबको ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिकल फाइल में लगाएंगे और रेडी करेंगे. एंड if possible you are coming to school, it is more beneficial for you and you can learn more things. Thank you. Have a nice day.